I would like to invite Dr. Adam Saud, Head of Social Sciences Department, Bahria University, Islamabad. Professor Dr. Adam Saud is serving Bahria University, Islamabad as Dean Faculty of Humanities and Social Sciences. He has a master's degree in political science and PhD in international relations. His area of interest are Central Asia, foreign policy, terrorism studies, and CPEC. He has served different organizations in different capacities for more than 2 decades. He is also a member of HSC and NCRC of IR. The topic of his speech is Future Trends in Eurasian Culture and Public Diplomacy. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji, everybody. The topic that has been given to me is the future trends in Eurasian culture and public diplomacy. Very tricky topic. I'm sorry, very tricky topic. And very, very challenging, very difficult to comprehend. 2-3 things they have been combined over here: cultural diplomacy, public diplomacy, and the most difficult thing is future trends. You know, basically what I want to explain is जो cultural diplomacy है arts of negotiation. You know? आप negotiate करते हैं, you carry out your foreign policy through different means. So diplomacy is one of the means to carry out your foreign policy because you have to live in this geostrategic, geopolitical environment जहाँ पे आपको सारा कुछ करना होता है. तो कल्चरल डिप्लोमेसी या पब्लिक डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं ये थोड़ा सा अनऑफिशियल मीन्स होते हैं, अनऑफिशियल चैनल्स होते हैं. बट एक बात ध्यान में रखिएगा, ये अनऑफिशियल चैनल्स भी ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग से ही चलाए जा रहे होते हैं. सो ऑफिशियल टू ऑफिशियल, जिस तरह से सर सेक्रेटरी ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, जब वो सेक्रेटरी ब्रॉडकास्टिंग से मिलेंगे तो दैट वुड बी एन ऑफिशियल मीटिंग. लेकिन वो किसी को टास्क असाइन करेंगे, हमारे जो कल्चरल डेलीगेशंस जाते हैं, आर्टिस्ट आते जाते हैं, सिंगर्स आते जाते हैं, ये सारे आपके कल्चरल डिप्लोमेसी होती है एक्चुअली, जिसको आप लेके चल रहे होते हो. सो ओके फाइन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ओल्ड सिल्क रूट्स, पुराने जो 2000 साल 4000 साल पहले 3000 साल पहले चलते होते थे, ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू यूरोप, थ्रू एशिया, मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट. खालिद साहब ने अभी पहली स्पीच में बात की थी सेंट्रल एशिया की. सेंट्रल एशिया हैड बीन एट द क्रॉस रोड्स ऑफ दैट ऑल सिल्क रूट्स, जो पुराने ज़माने में ट्रेड होती थी. और ट्रेड रूट्स जहाँ से गुजरते हैं, डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस दे मीट ओवर देयर. ठीक हो गया. तो जब डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस मीट होती हैं तो वहाँ पे एक नया कल्चर और नई सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाती है. आपकी उर्दू ज़ुबान, आपको पता है कि कहा जाता है 4 मेजर ज़ुबानों का निचोड़ है. 4 का नहीं, ज़्यादा का होगा, 4 मेजर हैं. बहुत सारी ज़ुबानें. क्यों? कभी वो आके हमारे ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी वो आके कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी वो आके कब्ज़ा कर रहे हैं. हम खुद तो अभी जाके 47 के बाद तो हमें हुकूमत मिली है. अभी भी लोग क्वेश्चन करते हैं पता नहीं हमें मिली है या नहीं मिली है. बट कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैड बीन इन्वेडेड बाय द आउटसाइडर्स. तो वो ज़ुबानें देखिए, फ़ारसी बड़े ज़माने तक इट हैड बीन द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया. हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारी उर्दू ज़ुबान. सो बेसिकली ये सारी बात जो मैंने आपके 5 मिनट लिए हैं जस्ट टू सेंसिटाइज यू पीपल कि कल्चरल डिप्लोमेसी और पब्लिक डिप्लोमेसी कैसे इमर्ज होती है एंड हाउ इट एक्चुअली कैरीज आउट द एजेंडा ऑफ any of the country, because every state has a national interest and that state has to achieve that national interest through different means, right? So when we talk about Eurasia, I mean Eurasia, technically speaking, or if we confine it to a narrow sense, it's the region that bridges Asia and Europe. जो former Soviet Union आप कह सकते हैं, उसके जो ममालिक हैं, they are Eurasian states, right? लेकिन अगर हम इसको broader context के अंदर देखें तो not only half of the Europe, but almost half of the Asian continent is also included into, including Pakistan, is included into the Eurasian continent. So if you look at the culture of this region, it's not homogeneous, heterogeneous है ना. ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कल्चर अगर मिलता है तो it does not mean कि चाइना का कल्चर हमसे मिलता है, या अगर हम मिडल ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ का कल्चर मिलता है, नहीं मिलता. There is a huge diversity, but there are always chances to bring unity within the diversity. So for that purpose, जो BRI project की बात यहाँ पे बार-बार हो रही है, because BRI project में एक चीज़ that is very important is the जो हमारे खालिद साहब को जहाँ पाकिस्तान में represent भी कर रहे हैं, community with shared future. This is a unique concept on the part of the Chinese president or the Chinese policymakers. कि शेयर्ड फ्यूचर की बात कोई नहीं करता. इफ़ एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब मैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ता हूँ तो आई सीक दे जस्ट केयर अबाउट देयर नेशनल इंटरेस्ट, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. They have never talked about the community with shared future. They talk about
उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, यू नो. सो इंक्लूसिवनेस नज़र नहीं आती है. बट व्हेन वी look at the modern day Chinese foreign policy concept, that is primarily based on Confucius ideology, which I'm going to discuss later on. उसके अंदर inclusiveness है, cooperation है, friendliness है, you know, that is what the Chinese policy makers are doing right now. It doesn't mean that China जो है वो अपने interest को पीछे रख के दूसरों के interest को pursue कर. No, the prime objective of this BRI project and all is the Chinese national interest to pursue those. But in a sense where the interest of other states should not be hurt, बल्कि सारे मिलके हम इकट्ठे एक shared destiny, shared future के ही मतलब है कि अगर हम जिंदा बच के तो सारे बच जाएंगे, नहीं बचे तो कोई भी नहीं बचेगा, you know. So obviously everybody tries to be alive, not to dead. So I think that the Eurasian cultural landscape is actually evolving. There are two parallel forces. One force is the nationalist force, but the other force is a universal force, a globalized force, which is trying to integrate different cultures to bring a new or a globalized kind of culture. और उसमें जो Chinese policy makers हैं, they are contributing their you know role. But one aspect of that cultural transition is the indigenization as well. आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, you go there, you look, you know, the people, they are focusing on to the indigenization of their culture. So far Central Asia is concerned, Central Asia, you know, it's the, I would say, जो road है, उसका backbone है BRI का. Because Central Asia को अगर आप निकाल दें, तो BRI का जो road project है, that is dead. ठीक है? Dead हो जाएगा. सारा Europe और Middle East जो है, that is dependent. The Chinese connection with Europe and Middle East is dependent on the Central Asian region. और Central Asia की सर मेरे ख्याल से फिर कभी भी I can interact with the students to tell them about Central, क्योंकि मैं Central Asia में लग गया तो फिर सर को तो आपने मना किया, मुझे उठा के यहाँ से नीचे उतारना पड़ेगा. So we see that, you know, in the modern times, diplomacy is facing so many challenges. Gone are the days जब वो cables चलती थी, official interaction होती थी. Now all of you are diplomats. All of you are diplomats. You have the whole world into your hands, right? The whole world is into your hand. You can interact with anybody in the world. So this is public diplomacy. You interact, you share your ideas, you get the other ideas, you know. तो इस तरह से एक public diplomacy. तो अभी जो digital media है या digitalization जिसकी हम बात करते हैं, that is actually and technological development. These are the two very, very important indicators and drivers so far the modern trends in the modern diplomacy are concerned. Soft power की मैं बात कर चुका हूँ. Soft power के आप अपने आप को project करें that we are very good, we are always there to support you, we are always there to collaborate and cooperate with you. ठीक है? तो इससे soft power अब तो खैर smart power का concept भी आ गया है. तो कल्चरल डिप्लोमेसी के एड्स कल्चरल प्रोपेगेंडा. आप लोग मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? कुछ पिछले सेशन में पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि जी ट्रेडिशनल मीडिया एंड द डिजिटल मीडिया. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों मीडिया एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इधर से एक खबर चलेगी तो उसको वहाँ पे दिखाया जा रहा है, उधर से कोई खबर आएगी वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी. सो बोथ द मीडियाज दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. सो वी हैव सीन दैट diplomacy is changed into virtual diplomacy. You must have seen onto televisions, जो head of states हैं, head of the governments हैं, वो online meetings कर रहे हैं. Instead हम जाएंगे, मौका मिलेगा, चलें जी let's have an online meeting. आपके online lectures हुए हैं, हमारी online meetings होती हैं, हम online conferences में present कर देते हैं, ठीक है? तो ये सारा जो कल्चरल जो डिप्लोमेसी है इसमें आपको जो वर्चुअल डिप्लोमेसी है. देन हेल्थ डिप्लोमेसी, somebody talked about the COVID-19. Yes, China has done a great job so far health diplomacy is concerned. So this was one of the tools of the soft power that was projected in the foreign policy of China over the period of time. उससे क्या हुआ? आपके सामने यूरोप में, इटली में ख़ास तौर पे इटालियंस जो है, बाकी यूरोपियन जो हैं, they were really, you know, angry towards the Americans. Trump था उस टाइम पे, उसने कहा ये क्या मतलब मुश्किल टाइम में आप हमें छोड़ गए. तो चाइना ने कहा घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, we are going to support you. So this है. तो इससे क्या हुआ? जो BRI प्रोजेक्ट है उसको मज़ीद स्ट्रेंथ मिलती है.
So far, economic and cultural integration under BRI project is concerned, there are so many, I'm not going to detail in detail. There are so many projects which have been launched under the BRI project. Just to name few, the Confucius Institutes, they are actually playing a very important role for the public and cultural diplomacy. So, for Chinese perspective regarding the BRI project is concerned. Then we see that the Silk Road Infrastructure Cultural Forum that was established back in 2014, that is also working on to this particular aspect. We see the Asian Infrastructure and Investment Bank, but more importantly is the scholarships, the Chinese scholarships which are given to the member states of the BRI. और सबसे अच्छी बात ये है कि you have seen एक trend है पाकिस्तान में भी, now students prefer to go to China for studies. Why? Because Chinese universities की जो QS और World Higher THE को क्या होती है, हायर एजुकेशन रैंकिंग, उस टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100, 200, 300 में आना स्टार्ट हो गई हैं. एंड लुक एट दी बजट दे आर इन्वेस्टिंग ऑन टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट. सो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि चाइनीज़ जो हैं, जिस तरह अभी सर बात कर रहे थे एंड ही सेड, गोंदल साहब ने कहा कि जी चाइना हैज़ टेकन आउट 40 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. ये एकदम से नहीं होता है. यू नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. मैं कन्फ्यूशियस्ट एलिमेंट्स की बात कर रहा था. 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं: लॉयल्टी टू फ्रेंड्स, personal honor and sincerity. These are the core values of the Chinese foreign policy right now. And then, another important aspect of Confucianism is that importance to know to the other instead, telling yourself that what I am. तो ये चीज़ें जो हैं, we have seen जो Chinese policy है उसमें आपको नज़र आती हैं. और we see the project is obviously फिर आप देखें कि चाइना मीडिया ग्रुप है, चाइना हैज़ स्टार्टेड देयर टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेजेस बट लोकल लैंग्वेजेस में भी हर मुल्क के अंदर उन्होंने अपनी स्टार्ट की हैं, सो दैट पीपल कैन सेंसिटाइज देमसेल्फ विद द चाइनीज़ कल्चर. एंड बिकॉज देखें, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मीडिया के स्टूडेंट्स आप, फेक न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त चलती है, प्रोपेगेंडा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है. एंड वी नो दैट इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया इज़ monopolized by the West. ऐसे ना BBC, CNN, ये सारे जो है, ये सारे के सारे एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान पर्सपेक्टिव आपको देंगे. So it's your duty as a student, as a scholar, as a media student to get to the reality है क्या, और उसको आपने फिर प्रोजेक्ट करने की तरफ लेके जाना है. So I have so other things as well, but just let me conclude. We know it's the Asian century. It's the Asian century, but you cannot deny the importance of Europe, or therefore we see the Eurasian continent, or the importance of Eurasia is emerging right now. Cultures are definitely, they would be bridge of dialogue and solidarity. But the most important thing is, while bridging all this, you need to understand that cultural sensitivities and diversities, they are there. Therefore, we have to respect the cultural sensitivities of all the states and all the regions. With this, I thank you very much.